Hello students, let's move on to the next numerical, number 14. I've written the question on the board. You can observe that this is a racing track, okay, which has a curvature of 72 meters. So I'll write given as radius of curvature track का 72 meters है. We are not recommending the vehicles to drive faster than 216 kilometer per hour. So ये maximum speed हो गया. Okay, so I'll write this as V max is equal to 216 kilometer per hour. अब किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है वेलोसिटी का, so हमको इसको मीटर पर सेकंड में करना है. So मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं? We have a shortcut to multiply this value by 5 and then divided by 18. ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा. If you observe, this will be, let's say, divided by 6 3s are, and if you divide this by 6 you will get 36. 3 1s are, and this will give you 12. So 12 5s are, that is 60. ठीक है, ये velocity हो गया. Then what we have said, with what angle should the road be tilted? मतलब road को कितना angle देना? Banking of road का question है. So I will write, we are supposed to find the angle theta. Okay, so next part is, by what height its outer edge be with respect to the inner edge if the track is 10 meter wide. So ये part explain करने के लिए ये diagram observe करो. ये track को tilt किया हुआ है. This is that angle theta. Okay, so कितना height दिया है उसको, वो हमको यहाँ पर मिलता है h. Okay, and track का जो width है वो ये रहा. This is the width of the track. So this is 10 meter. Okay, so ये part को find करना है, तो I will write we are supposed to find the height. Okay, and ये कैसे find करेंगे? बहुत simple है. Here we have a right angle triangle form. So simple Pythagoras apply करेंगे. I think Pythagoras के लिए ये value चाहिए. So instead of that हम लोग angle sin theta apply करेंगे, and that is how we will get the final answer. So first thing is to find the value of theta. So which formula we are going to use? Very easy. अब ये बैंकिंग ऑफ रोड का सेक्शन ऑब्जर्व कर लो, उसमें फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b स्क्वायर अपॉन rg. ओके, g का वैल्यू हम 10 कंसीडर करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट दिस. tan इनवर्स b स्क्वायर, दैट विल बी 60 into 60. r value is 72 and g value is 10. So this gets cancelled. Okay, 6 1s are, 6 12s are, so 12 1s are and 12 5s are. So we got tan inverse of 5. Okay, now you will have to take your log table. उसमें आपको natural tangents में जाना होगा and वहां पर ये value search करना है 5.00. So I'm having my log table with you. Natural tangents में I can tell you, you are supposed to reach angle 78. यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ. Let's say this is your 78 degree. Okay, and along this horizontal line आप 5.00 वैल्यू ढूंढ सकते हो. To be specific, 5.0045 ये आपको मिलेगा. अब यहाँ से आप टॉप पे जाओ तो वहां पर लिखा होगा 42 minutes. This section is for angle. यहाँ पर angles है 77, 76 and so on. So यहाँ पर देखो 5.00 मिल गया. So from that, what you understand, the answer is 78 degrees and 42 minutes. Okay, so theta का value हमको मिल गया है. So I make your final answer. Our final answer is theta is equal to 78 degrees 42 minutes. Now let's go for the second part. Second part में मैंने जैसे बताया sin theta apply करो ये triangle है. So I'll write sin theta is equal to, opposite क्या है h, and इसका hypo ये distance होगा which is given as width 10. ठीक है, opposite upon hypo. So therefore h will become 10 into sin 78.42 because theta हम find कर चुके. So again going to your log table. इस बार natural science में जाने का है आपको, and this time you will do the reverse process, like 78 degree 42 minutes
आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कॉलम डिग्रीज का है 78 एंड ये हॉरिजॉन्टल रो मिनट्स का है। सो ट्राई टू मर्ज दिस, यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगा आपको। ओके, सो आई सर्च इट फॉर यू, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई इट। आई एम एबल टू सी वहां पर 9806 लिखा हुआ है। सो ये सारे वैल्यूज 0 पॉइंट पे होते हैं। सो दैट इज हाउ 10 into 0.9806, and when you multiply it you get your final answer as 9.806 meter. This is the height, and this is how we complete the numerical. So students, we are proceeding for next question, and this next question is linked with the previous question. आप देख सकते हो the road in question 14 above, okay, जो previous question किया वही road अगर construct कर दिया जैसे हमको आंसर आया, यहाँ पर थीटा का वैल्यू आया था, okay, which was something around 78 degree, okay, road बना दिया है। Now the coefficient of static friction between that road and vehicle is given as 0.8. तो यहाँ पर मैं mu का वैल्यू 0.8 सब्स्टिट्यूट किया। Then what is the question? What will be their lower limit? हम लोग ने Vmax previous question में देखा था, it was 216 किलोमीटर पर आवर, जो मीटर पर सेकंड में 60 आया था। Now they are asking for minimum velocity, कि lower limit क्या होगा? Okay, so in my lecture number 4 on this chapter, you can observe this derivation. V min का formula क्या आता है? Derive किया हुआ है। So वही formula हम use करने वाले हैं। Okay, so I'll write the formula on this side. The formula of V mean is equal to square root of Rg tan theta minus mu s divided by 1 plus mu s tan theta. Okay, so इसमें सब value substitute करना है। Now you can observe कि tan theta का वैल्यू हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन से अवेलेबल है। दिस वाज थीटा, ओके, tan इनवर्स 5। सो ये इधर आएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू 5। सो हेंस आई हैव केप्ट दिस कि हम लोग यहाँ tan थीटा का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5। ओके, रेस्ट ऑल थिंग्स आर गिवन, बस कैलकुलेशन का पार्ट है। सो आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट हाउ टू डू द कैलकुलेशन। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। r का वैल्यू है 72 into 10 into, here we have 5 minus 0.8 divided by, I'll write 1 plus 0.8 into 5. So let's go for next step. ये हो जाएगा आपका 720 into 5 minus 0.8 will be 4.2. This will be 4. 5 into 0.8 will give you 4. 4 plus 1, that will give you 5. Okay, now it is very simple. 5 ones are, and 5 divided by this will give you 1 4 4. Okay, multiply करो इसको. I hope you will get the answer as 604.8. Okay, then take the square root of this. अब 604 का square root नहीं मिलेगा आपको इधर decimal shift करना पड़ेगा such that power should be in even number. Okay, अगर आप decimal 1 digit shift करोगे 60.48 हो जाएगा, but power will become 10 raised to 1 जिसका square root नहीं मिलेगा. So what you will have to do is 6.048 into 10 raised to 2. इसका square root मिलेगा आपको square root में से, and this will give you as 10 raised to 1 जब square root में से निकल जाएगा. Okay, so that is how you will get the answer. Now this answer will be in मीटर पर सेकेंड. लेट मी टेल यू, हमको किलोमीटर पर सेकेंड में अगर आंसर चाहिए तो व्हाटएवर वैल्यू यू गॉट ओवर हियर यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 18 एंड डिवाइड इट बाय 5. रिवर्स प्रोसेस हो गया. किलोमीटर पर आवर प्रीवियस केस में हमने मीटर पर सेकेंड किया था, 5/18 किया था. सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू 18/5 टू गेट the answer in kilometer per hour. Okay, and answer will come something around 88. ठीक है, so this is the part. Now let's go for one more case. देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है. By how much can the upper limit exceed in this case? So definitely थोड़ा changes हुए, friction आया है. So upper
लिमिट कितना चेंज होगा, दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंगल यहाँ पर 78 डिग्री आया था. 78 डिग्री का एंगल, इट इज टू ह्यूज, टू ह्यूज. ओके, ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल हो जाएगा वो. आर यू गेटिंग इट और नॉट? सो इन दिस केस यू शुड रिमेंबर वन थिंग कि अगर एंगल 45 डिग्री है या तो फिर उससे ज्यादा है, if theta is equal to or greater than 45 degree, तो मैक्सिमम लिमिट इंफिनिटी हो जाता है. ओके, then V max becomes infinity. Okay, no limit I can say. So in this case angle 78 degree आया था, which is definitely greater than 45. So upper limit कोई है ही नहीं इसका. Okay, so that is our final answer for upper limit. I hope you understood this, that there is no limitation on upper limit, and this way we complete this sum also. Okay students, 16th sum, you can observe that it is a stunt in which cyclist is taking horizontal circles. Okay, and the radius of that cylindrical well is given as 6.05. So I will write the value of R as 6.05 meter. Coefficient of friction is 0.5. Mu s is 0.5. They have asked you the minimum speed. So I'll write we are supposed to find the value of V minimum, and what they have asked, if that cyclist increases its speed by 20%, 20% से speed बढ़ा दिया, तो force of friction कितना होगा? So force of friction, you know, it is going to be static frictional force. Fs का value भी पूछा है, and mass दिया हुआ है, ठीक है? So I'll write m as 50 kg. So this is what is the given and to find. अब ये जो क्वेश्चन है, इट इज डेफिनेटली वॉल ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल सर्कल में साइक्लिस्ट घूम रहा है. ओके, यू कैन वेरी वेल रेफर माय लेक्चर नंबर 3, उसमें ये टॉपिक कवर किया है, वॉल ऑफ दैट. सो दिस इज दैट डायग्राम, यू कैन ऑब्जर्व, एक्सप्लेन किया है. सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. व्हाई? बिकॉज़ साइक्लिस्ट अपना वेट ये वॉल पे एक्सर्ट करेगा, सो अकॉर्डिंगली नॉर्मल रिएक्शन है. This is the weight of the cyclist acting always downward, okay, and accordingly force of static friction is upward. उसका reason मैंने बताया है. Force of static friction का काम क्या है? Skidding, slipping, prevent करने का. So यहाँ पर cyclist जो है वो नीचे गिरेगा, and accordingly static friction उसको prevent करने के लिए ऊपर की तरफ act करेगा. Now the formula in this for V minimum, you can observe in that lecture also, it is directly learn, which is Rg upon mu s. फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है, सिर्फ याद रखो ये फॉर्मूला फॉर वॉल ऑफ डेथ. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 6.05, g का वैल्यू 10 एंड mu s का वैल्यू है 0.5. सो दैट इज हाउ आई विल गेट 60.5 डिवाइडेड बाय 0.5. डेसिमल हटा दो, so this will give you 605 divided by 5. So 5 ones are, this will give you 121. So square root of 121. It is very easy. 11 meter per second. ठीक है, formula substitution. Now second part, force of static friction. अब ये diagram observe करो. Upward force is balanced by downward force. So force of static friction is nothing but mg. m का value question में दिया हुआ है, which is 50. g का value हमको पता है, which is 10. So that is how you get answer as 500 Newton, and the sum is done. Let's proceed for next question. A motorcyclist is undergoing vertical circles. तो ये vertical circular motion का question है. Okay, the speed of motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. अब इसका मीनिंग समझो. 6 meter obviously minimum value है and 10 meter maximum value. बट ये 6 मीटर कहां पर होगा? ऑब्वियसली 6 मीटर पर सेकंड टॉप पे होगा, बिकॉज़ इधर ही स्पीड कम हो जाता है एंड इधर ज्यादा रहता है. सो इसके रेंज में रहता है, एंड यहां पर 6 और 10 के बीच में कुछ रहेगा. सो आई राइट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज राइट नाउ 6 and the velocity at this point is right now 10. So I will write given as, फिलहाल velocity at point A 6 है and velocity at point B
10 है. Clear? Calculate the diameter of this sphere. ये vertical circular motion जहाँ पर हो रहा है, okay? उसका diameter find करना है. So I'll write to find capital D. Okay? As well as they have asked how much minimum values are possible for these two speeds. So इससे क्या समझ में आ रहा है कि 6 मीटर पर सेकंड पे डेफिनेटली वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो रहा है, बट इससे स्पीड कम होगा. अगर 5 होगा तो भी पॉसिबल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सो आपको मिनिमम स्पीड फाइंड करना है. गॉट दिस? कि इससे भी एक मिनिमम वैल्यू है जहां पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पॉसिबल है. सो यू आर बीन आस्क्ड टू फाइंड द वेलोसिटी एट ए minimum as well as velocity at B minimum. You get to know and understand this very well जब मैं इसका आपको फॉर्मूला बताऊं. Okay, so how we are going to first find the diameter. So वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए आप लेक्चर नंबर 6 एक बार ऑब्जर्व कर लो. उसमें मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. So उसी का कॉन्सेप्ट में वापस यूज कर रहा हूं. Okay, so what I am going to do is we know by conservation of energy, टोटल एनर्जी सेम रहने वाला है एट पॉइंट बी एज वेल एज एट पॉइंट ए. टोटल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आएगा. नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम इसको डेटा अज्यूम करते हैं. ओके, लोअर लेवल. सो ये पॉइंट तो ग्राउंड पे टच हो गया. So no height 0. Kinetic energy of A half mv square and potential energy इधर that is mg. इधर का height कितना होगा? That will be equal to diameter. Correct or not? ये diameter होगा. Radius plus radius. So here I will write d, or you can write 2r also. Got this? So now we can proceed. Half m. यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो vv square minus ये स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म उधर जाएगा तो हाफ एम कॉमन, bb स्क्वायर माइनस ba स्क्वायर इज इक्वल टू mg into d. So mass got cancelled. Now it's time to substitute the values. So therefore d is equal to half into bb square 10 square 100, ba square 36 and ये g का टर्म भी डिवाइड होगा इधर. So here I will write 10. So that is how I got 64 divided by 2 into 10. This got 32. So your final answer comes as 3.2 meter. ये हुआ diameter का केस. Now second part, as I told you, V minimum or V at A as well as at B find करना. So it is directly formula. If you have checked the lecture number 6, V minimum ये point पे topmost point पे formula होता है root RG. बस यही अप्लाई करना है. So R का वैल्यू आई होप डायमीटर मिला है. So R will be half of that 1.6 into 10. So this will give you 16. 16 का रूट 4. ठीक है. So ये मिल गया हमको at A. Similarly minimum at B का फॉर्मूला क्या होता है? It is root 5 RG. Okay. So that is how 5 into इसका आंसर 16 आने वाला है. ठीक है. So your last answer will be 4 root 5. Okay, you can definitely find out the square roots from the log table. फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल में इसका आंसर लास्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो एंड करना भी चाहिए. Okay, so this is how I hope you understood what is the meaning of minimum at A and B. Straight formula. Okay, so this sum also gets completed. Thank you.